Today in our analytics and application class, we are going to have a discussion on application of marks. Marks क्यों मिलता है? Application of marks in real life. You know that analytics and application is a class where we learn why we are learning so it can be applied in real life. How it can be applied in real life. Correct? No. Correct? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, cool. Yes, ma'am. So today we will all understand why do we have marks. Who would like to answer that to me first? Why do we have marks? Ma'am, सबके पास सेम टेक्स्ट बुक है, सबके पास तो सेम मॉडल पेपर भी है, सबके पास तो सेम आंसर भी है, फिर मार्क्स क्यों चाहिए? सबको पता है ना यहाँ पे तो इंफॉर्मेशन है, तो मार्क्स की क्या जरूरत है? Why do we need marks? Yes, Ranveer. I'll come to you, I'll come to you, Subhan. I'll come to everybody turn by turn. I will pass that question to everyone. Until then, everybody will wait your turn. Okay, don't keep raising your hand. Now, I already said that I will come to each one of you to give you your turn. Okay, so don't keep raising your hand. I will come to you. Yes, Ranveer, tell me. ma'am, so our teacher can understand that how much we understood from the lesson or how much we didn't understand. So I'm going to write down your points. Okay. How much we understood. Okay, let me write this down. How much we understood. Okay, इससे टीचर को क्या पता चलेगा? कि हमको कितना पता चला. तो उसके लिए तो वो पूछ भी सकती है ना तुमको, और तुम्हारे पास तो टेक्स्ट बुक है, तुम तो सीधे बोल सकते हो, अरे आई नो दिस आंसर, इट्स ऑल देयर एट द बैक ऑफ माय माइंड. We should get no. What? By heart we should get. By heart. We should understand what we are reading. Not रट्टा मार के बुक से ऐसे ही पढ़ो. Understand what is getting done in class. Understand what you have learned. उससे मार्क्स का क्या कनेक्शन है? तुमको जो समझ में आया है उससे मार्क्स का क्या कनेक्शन है? Okay, now I will go to Pranav. Pranav, let's ask you. Pranav, as usual, network gone. Okay, Subhan, I'm coming to you. Subhan, marks क्यों? Why marks? How does marks affect our real life? Marks की क्या जरूरत है? Marks are used to calculate how much they understood from how much they understood from lesson and how many things they analyze from that lesson and which they don't know, which questions they have doubt. This all are marks. You are saying how much you understood. Okay. Now, how much you understood जानने के लिए टीचर एक एक्सपेरिमेंट कर दे. Okay. पता चल जाएगा कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं. इसके लिए पेपर में क्वेश्चन आंसर लिख के मार्क्स दिखा के क्या होगा? बिकॉज टीचर तो एक ही लेक्चर देती है उस क्वेश्चन पे, उस सब्जेक्ट पे. वेट, समथिंग with okay, teacher teaches the whole class in the same way. ऐसा तो नहीं है कि रणवीर को अलग पढ़ाती है, प्रणव को अलग पढ़ाती है, तुमको अलग पढ़ाती है, ऐसा तो नहीं होता है. ओके, तो टीचर तो पूरे क्लास को एक जैसे ही पढ़ाती है, राइट? देन शी ऑल्सो आस्क्स इन द एंड if you all have understood or no, and everybody says understood. Subhan, I'm talking to you. Why are you reading some book right now? Yes. Why? What? How much performance we give? How much performance you give? What is your performance? Oh, okay, that's a good point. I'm noting that down. How much performance you know? Okay, fine. Tanishka, I'm going to come to you. Why do you think we have marks? Why? Ranveer, I said When we give raising hands. I'm giving everybody a turn.
Yeah. Yes, ma'am. When we give test, we get marks that we will know that how we and even ma'am will also know that how means how much we understand that lesson or that poem. Then we can means go front and we give test because we study that we can be something like teacher तनिष्का, some. तुम्हारा अभी जो मार्क्स मिला है इससे पता चलने वाला है क्या वो सब? हाँ, बताओ ना. Ma'am, then also Then also. एक मिनट, then also means what? What kind of English is that? Then also. Then also ऐसा किधर तुमने पढ़ा है? Frame proper sentences. that studies that One minute. I'll come back to your previous answer. You said then we know whether we can become teacher or whatever. Yes, ma'am. तो ये marks मिलने से. And also we go Wait. Okay. So you say because we get marks, we know what we can take, what we have to do. Whether we can become yes, teacher ma'am. or When no. we are 10. थाम ग मी बोलती है थाम ग. So if you don't get marks, you won't be able to find out what you want to be in life. Is that what you're trying to tell? That if you don't get marks, हमें पता नहीं चलेगा कि हमें टीचर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि क्या बनना है, ऐसा है क्या? अब बोलो. But ma'am, marks are when we get marks now means we know that how we understand this, we don't know this, and even ma'am understand that I can we get good marks, we can go to next lesson. That's why we give marks. So that means y'all, okay, let me ask you this now. Okay, so अगर तुमने अभी ये टेस्ट दिया, you all just gave a test, marks बहुत ही खराब आए, like you got 10 out of 50, you got 15 out of 50, so teachers will not go to the next subject, next chapter? No, because we don't understand now. Yes, Okay. ma'am do like that. But in a class of 10 children, if 8 children got very good marks and 2 children got very poor marks, will the teacher go to the next chapter or no? No, otherwise ma'am explain that. Otherwise ma'am will tell to one good child to explain it. Good child, what is good child? Who has got perfect marks like 50 out of Ranveer, 48. That. So Like that, what is perfect child? What is perfect marks? See, I am not saying these words. You are saying these words. So you should be able to explain what you're telling me. तूच बोली perfect marks, good child. हे सगळे कोण बोलते तुला? Who tells you these things and how do you come up with these thoughts? Who will get good marks? Like Ranveer, who will get good marks, ma'am will tell to that boy to explain her, and ma'am will understand that Ranveer is understand that or not. Like that even. So I'm going to come back to the same question again. The teacher teaches everybody together in the class. So why does it happen that one child understands and the other child doesn't? Why does it happen that one child gets good marks and the other child doesn't? And how does marks finalize what you can be in life? In 10th standard we get marks, then we I am not talking about 10th standard at all. मला 10th standard तक तो पहुंचना ही नहीं है. 10th standard की कोई बात ही नहीं कर रहा है. मैं 10th standard या board exam की बात नहीं कर रही हूँ. Then my last one was wrong. I'm not talking about 10th standard. I'm not talking about 10th standard or board marks.
आई एम टॉकिंग अबाउट मार्क्स इन जनरल. तुम कभी भी एग्जाम देते हो तो मार्क्स मिलता है, एंड हम सब एकदम ईगरली वेट करते हैं कि क्या मार्क्स मिलने वाला है. मार्क्स Yes. क्यों होना चाहिए? व्हाई मार्क्स? To understand teacher how they have understand or not understand. They have understand or not understand. From the marks, the teacher know. So now Tanishka, tell me something. You got less marks in chemistry. Does that mean you did not understand chemistry, or does that mean that you did not prepare well for chemistry? Not prepared well for chemistry. So Then also when you are saying ki teacher will know whether you understood or no. Now teacher is thinking that you have not understood, but you are telling me that you have not practiced well. That is why you didn't get good marks. no, I have practiced well, but my spelling mistakes or and some definitions gone. That why I lost my marks. So you couldn't have practiced better for the definitions? Yes. Yes. You couldn't have practiced better for the spellings? No, practice, but some only silly spelling mistakes. Okay. So if you have lost marks because of spelling mistakes, then does it mean you did not understand chemistry, or does it mean you did not understand No, the spelling? not prepared. Not prepared. Oh, okay. Okay. So first you started off saying that teacher will understand how much I understood the topic or no. Now you are agreeing that I get low marks because I have not prepared. Correct? Yes, I have not prepared well. So इससे marks का क्या connection है? तुम अच्छा prepare करती तो तुम्हें अच्छा marks मिलता. Right? But mom, Okay, I'm going to go to Pranav now. Finally, he's back in network. I'm going to go to Pranav. Pranav, marks क्यों देते हैं? Exam होता है. Marks. Why do you get marks? Marks are important in our real life because without marks, the child can't go to next class. Without marks, child can't go to next class. Oh dear. No marks, no next class. मैं ऐसे लिखने वाली हूँ हाँ यहाँ पे. I have written no marks तो no next class. अरे बाप रे बाप. Now you know what, now the system is such that even if you don't get very good marks in 6th standard, you can go to 7th standard. Okay, now does that mean that the child is not ready for 7th standard? अच्छा marks नहीं मिला है भाई, इसको समझ नहीं आ रहा है, पर चलेगा, तब भी उसको 7th standard भेज देते हैं, वहां चल के देख लेंगे क्या करना है. हाँ, Ma'am, but if he not studied in 6th standard, but then he gone to 7th standard, ma'am, in 7th standard he can't pass, ma'am, because he didn't understand the basic from 6th standard. क्या बात है, he didn't understand the basics only from 6th standard. So now from 7th he will not go to 8th, correct? Okay. So ma'am, because बोलो. Ma'am, because he had not studied in 6th standard, so something in from 6th standard, ma'am, will there in 7th standard, ma'am. So in test he can't pass in 7th standard. Okay, fine. All right. Now we are talking very very specific कि उसको marks नहीं आया तो वो अगले क्लास में नहीं जा सकता है, या फिर इस क्लास से अगले क्लास में तो चला जाएगा, लेकिन अगले क्लास में कोई बेस नहीं रहेगा तो he can't go further. But ये तो हम उसको विदाउट मार्क्स भी बता सकते हैं ना कि तुमको ये बात समझ में नहीं आ रहा है, इसमें मार्क्स की क्यों जरूरत है? ये सब समझने के लिए मार्क्स देना क्यों जरूरी है? हाँ प्रणव, ये सब समझने के लिए कि वो इधर से उधर जा सकता है क्या, उधर से उधर जा सकता है क्या, ये सब जानने के लिए मार्क्स क्यों जरूरी है? Pranav, are you there? Oh dear, you have just picked up a good conversation, man. Okay, I have lost Pranav, so I'm going to come to Ranveer. Yes, Ranveer, back to you.
Ma'am, the both things which Pranav told, no, that he will not learn the basic and he will not go to the next class. I was going to tell the same thing, but one very specific thing in that he will not, if he didn't get marks, he will not learn more deeper in that subject. You will learn deeper into a subject only if you get good marks. No, ma'am, I didn't mean that. I'm meaning that, look, you get good marks means you understood. Didn't get good marks means thoda idhar udhar ho gaya. But you can ask the child to explain it now. Yeah, ऐसा हो सकता है that we can ask the child to explain and then figure out whether the child understood or not. But teacher will be more better. Teacher will be better. For? Teacher will be better for? For making the child understand. Of course, teacher is only going to understand. What is my question? Why are marks important? Marks important क्यों है? ये मार्किंग सिस्टम क्यों होना चाहिए? मार्किंग सिस्टम क्यों होना चाहिए? Is you all are, you know, some of you got very good marks, some of you got very poor marks, some of you got like beach mein, okay. But why? Why is that important? Then I don't know. Ma'am, I was just saying to get promoted to the next class. So are we getting marks just so we can go into the next class? Pranav, wait, let me ask that question to Pranav. Pranav, you said कि basics ready होना चाहिए तभी हम अगले क्लास में जाएंगे तो वहां से आगे बढ़ सकते हैं. So क्या marks हम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि हमको अगले क्लास में जाने का मौका मिले? No. तो फिर तुम ही ने बोला कि अगर मुझे इस क्लास में अच्छा मार्क्स नहीं मिला तो मैं अगले क्लास में तो चला जाऊंगा, लेकिन वहां से मैं आगे नहीं जा सकता because I can't get good marks. So my basics in learning is very important. So what happens when your basics in learning is important? You tell me. You brought up that topic, so you tell me. Basics in learning. कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी, मराठी हो या पीटीबी हो. Why is basics in learning important? And because I'm the best. बोलो बोलो, टेल. रणवीर तो माउंटेन के ऊपर ही चला गया, ये बात सोचते सोचते करने लगा. तनिष्का बहुत गहरे सोच में घुस गई है. सुबह तो अपनी दुनिया में मस्त है. विहान, stop biting your nails. By the way, Vihan, I want to compliment you. Your grey t-shirt is looking very nice. It's called ash grey. It's looking very good on you as well. Okay, Pranav, I'm waiting for you. Why is basics in studies? Class के subjects में basics जानना क्यों जरूरी है? मैं तुमको तुम्हारे भाषा में पूछती हूँ. Your favorite subject is math. Multiplication, division, addition, subtraction. ये जाने बगैर हम अगले क्लास में तो चले जाते हैं. कई सारे लोग तो आज भी मिस्टेक्स करते रहते हैं मल्टीप्लिकेशन में. तब भी तो हम अगले क्लास में गए ही हैं, है कि नहीं? हम ग्रेड 1 से एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं. करेक्ट प्रणव? और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो हम ग्रेड 3 और 4 से सीख रहे हैं. करेक्ट? पर आज तक गलती करते हैं. आज भी तुम लोगों को ग्रेड 6 में आके मैथ्स का सम्स दिया तो तुम लोग फुल टू गलती करते हो. मल्टीप्लिकेशन में पता नहीं क्या मल्टीप्लाई करते हो, क्या टेबल्स लगाते हो, मस्त में गलती करते हो. बट तुम लोग का तो बेसिक्स ठीक नहीं था, तब भी तो तुम लोग यहाँ तक पहुंच ही गए हो. ऐसे कैसे? या तनिष्का, आई एम ऑल्सो थिंकिंग, ऐसे कैसे? असं कसं? Tanishka is saying something. Yes, Tanishka, बोलो. सोचना तो पड़ेगा ही इस पर तो सोचना ही पड़ेगा, इसीलिए तो एनालिटिक्स एंड एप्लीकेशन का क्लास है. एनालाइज करो,
एक थॉट लो, एक सोच को उठाओ और उसको एनालाइज करो कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, ये इसके अलावा ऐसा क्यों नहीं होता है। सोचो सोचो सोचो। आज तक तुम लोग पिछले 6-7 साल से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड बॉड मास नहीं, डी मास, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डी मास बोलते हैं इसको। वी आर गोइंग टू लर्न दैट इन आवर नेक्स्ट चैप्टर नाउ। हम डी मास, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन 6 साल से करते आ रहे हैं बब्बा। आज तक 10 सम दू तो 10 के 10 सही नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? तब भी तो उधर से लेके इधर तक पहुंच ही गए हैं, ऐसा क्यों? बोलो काय झालं तनिष्का? विचारात पडली का? खूप. खूप? ओहो, आता तरी विचार कर, मार्क्स कशाला हवे आपल्याला? व्हाई डू वी नीड मार्क्स? एंड यू नो व्हाट, आज के क्लास में ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ ना, अगले क्लास तक मैं इस क्वेश्चन को खींचूंगी, बिकॉज आई नीड यू ऑल टू टेल मी व्हाई डू यू नीड मार्क्स। तुम्ही को सब लोग मार्क्स दिए जा रहे हैं। एक चैप्टर हुआ नहीं कि उसमें टेस्ट और मार्क्स, दूसरा चैप्टर हुआ नहीं कि उसमें टेस्ट और मार्क्स, तीसरा सब्जेक्ट हुआ नहीं कि उसमें टेस्ट और मार्क्स, मार्क्स 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 मार्क्स। हे भगवान, चारों तरफ से मार्क्स का एकदम बॉम्ब फटते जाता है। बट क्यों होता है मार्क्स? क्यों तुम लोगों ने आज तक सोचा नहीं? रणवीर is saying something. Yes, रणवीर बोलो। Ma'am, so we can understand. अंडरस्टैंड व्हाट? अंडरस्टैंड How करने के we लिए तो will टीचर know. सिखा रही है ना क्लास में, उसके लिए मार्क्स की क्या जरूरत है? मैम, तो हम अकेले जब पढ़ने वाले कैसे होगा? मैम उनको तो क्वेश्चन दे देगी ऐसे, ओके? इसके लिए हम अकेले पढ़ेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा? क्या हमको कैसे पता चलेगा कि पढ़ाई करते समय नोट्स कैसे डिक करना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? नो, फिर वो नहीं। फिर क्या पता चलेगा? क्या क्लास कैसे में पता मैम चलेगा? जो सिखा रही है, अटेंशन। Your marks are for the attention you give in the class. What, man? Huh? Not now. Huh? So like ma'am is teaching us now, we understood it. So ma'am gives homework for that only. So did we understand it in the class or no? The marks are also for the same thing. Did we understand it in the class or no? But whether you understood it or no, how does marks define that? Now Tanishka got less marks in English. Does that mean she doesn't understand English? Of course, every classroom happens in English. She understands everything I'm teaching. English तो language है ना, उसको तो सब समझ में आ रहा है कि नहीं तनिष्का? तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अरे बाप रे, मुझे टेंशन I was हो जाता है। not prepared for English. हाँ, रुक सुबान, I'm coming to you. So Tanishka, you got less marks in chemistry, you got less marks in English. So does it mean you don't understand English, or does it mean you don't understand chemistry? What is it? Or does it mean you don't No, I understand English also and chemistry also, but ma'am gave everything. हाँ, ma'am तो gave model paper only. Ma'am तो gave model paper only. She said ये 20 question का question bank है. I was not prepared. तब भी what did you say? But I was not prepared well. Why? Yes, Subhan. Okay, I'm going to go to Subhan. Bolo Subhan. Parent defines marks. Yes, Subhan. Marks are given for that student how many years analyzed that chapter. I couldn't understand anything. Subhan. Wait. I couldn't understand anything that you said. Repeat. I will try to lip read.
given for for that student which he has how much he has analyzed that chapter, how much he know about the chapter, and how much thing he have doubt, and how much thing he don't know about the chapter. So for that we are given marks. So do you mean you have to wait until the test to understand whether the child understood or not? Do we have to wait until the class test? Teacher has been teaching that chapter since 1 month. All of you had the opportunity to ask your doubts to the teacher. All of you had the opportunity to prepare since, wait. Now I am talking. When you were talking, I was fully listening. Now I am talking, you fully listen. You all had 1 month to prepare for the test. You all had 1 month to understand what is being taught in the class. You all had 1 month to ask your doubts to the teacher. You all had 1 month to read the chapter and figure out whether you understood it or not and ask your doubts to the teacher. ऐसा क्यों कि जब एग्जाम आए और मार्क्स मिले तभी तुमको पता चलेगा कि तुमको कितना समझ में आया कि नहीं? क्यों मार्क्स डिफाइन करता है क्या कि तुमको कितना समझदारी है? तो फिर मार्क्स ये मार्क्स है ना, समझे कि इसको कितना समझ में आया लेसन और ये कितना कंपटीशन दे सकता है दूसरे को. कंपटीशन, ओयो बड़ा वर्ड लेके आया रे, बड़ा वर्ड लेके आया रे. कंपटीशन, तुम कंपटीशन के लिए टेस्ट देते हो? तुम कंपटीशन में रहने के लिए टेस्ट देते हो? चलो चलो do one thing, go take a snack break, time हो गया है. Take a snack break, bring your snacks to class and we'll sit and talk. Bring your snacks to class. चलो. So Subhan, you said that you are preparing for competition. So marks मिलता है competition के लिए ताकि समझ में आए कि कौन कितना आगे कौन कितना पीछे. Is that correct? Why do you need competition when you are looking to gain knowledge? तुम स्कूल आते हो कंपटीशन करने के लिए, मार्क्स लेने के लिए, इसके लिए स्कूल आते हो? नो, तो फिर किसके लिए? मार्क्स मिलने के लिए स्कूल आने की जरूरत नहीं है. तुम तो क्लास टेस्ट क्यों, होम टेस्ट भी कर सकते हो, है कि नहीं? तनिष्का है कि नहीं? होम टेस्ट भी हो सकता है ना, घर में भी तो टेस्ट हो सकता है ना. तनिष्का हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वो तो ऐसे ऐसे करके बोल रही है. सुन लो भाई. हाँ बोलो. We go school to learn, and in online class we understand less than when we are school. Online when we are school, no. Wait. Happy. Online class you understand less than what you are in a physical class. Okay, if it is coming from you, I'll accept what you're saying, but everybody is getting the same level of learning ना बाबा. सबको एक जैसे पढ़ा रही है, फिर क्यों मार्क्स इतना ऊपर नीचे? The child who has get less marks, that child is not prepared for exam, and who has get more marks, he has prepared for the exam. Okay, so you are coming back to your point of preparation. You had earlier also said that जिसने ठीक से prepare नहीं किया है उसको ठीक से marks नहीं मिलेगा. तो इसमें ना स्कूल का गलती है. Okay, 1 minute रणवीर. इसमें 1 minute विहान, I'll come to you. Wait. इसमें स्कूल का गलती नहीं है, इसमें टीचर का गलती नहीं है, इसमें चाइल्ड के प्रिपरेशन का गलती है. क्योंकि क्वेश्चन बैंक देने के बाद भी ठीक से पढ़ा नहीं है और मार्क्स नहीं लिया है, तो इसमें तो तुम्हारे प्रिपरेशन का गलती है. इधर तो स्टूडेंट को पकड़ना पड़ेगा, स्टूडेंट को पकड़ के एकदम कूटना पड़ेगा. तुम्हें पता है कुटाई क्या होता है? वो चाय के लिए ना वो अदरक डाल के ऐसे ऐसे कूटते हैं ना, उसको कुटाई बोलते हैं. फिर तो ऐसे स्टूडेंट को पकड़ के तो ऐसे कूटना पड़ेगा, कुटाई करना पड़ेगा एकदम ड्राई रोस्ट करके. रुको, विहान wants to say something. Wait, you keep eating till then. Yes, Vihan, you wanted to say something. Ma'am, if I have this competition of clever student happening this month in the
Fruit salad. It will happen on 18 of this month in this year. What? Famous cooking will happen on Friday of fruit salad in 18 of this month and this year. Cooking salad will happen when? Fruit salad, not vegetable Fruit salad. Okay, when is Yeah. that competition for fruit salad? कब हो रहा है? 18th of September. Competition नहीं है वो विहान. That is just flameless cooking that we'll do in class. Competition थोड़ी है वो. It's not competition. What is Ranveer showing? Ranveer is showing kutai. Oh my God. Tanishka Ranveer is showing kutai. Okay, we have another 5 minutes to talk about this topic. Let's try and figure out. Any choice? Any more answers that you all have around why do we need marks? Marks क्यों जरूरी है? नहीं? प्रणव, दूसरा काय बोलायचंय का तुला? सुभान? Ma'am, we get marks for looking that how वो कितना आगे और कितना पीछे है. उससे किसको फर्क पड़ने वाला है? कौन कितना आगे और कौन कितना पीछे है? इससे किसको फर्क पड़ने वाला है? No one. Okay. तुम ही आंसर दे रही हो, तुम ही उसको नेगेट भी कर रहे हो. तुमने बोला कौन कितना आगे और कौन कितना पीछे ये पता चलता है और ये जरूरी है. और मैंने पूछा किसको इससे फर्क पड़ेगा, तुम बोल रहे हो किसी को भी नहीं. हाय 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 हाय, क्या बोलूं, तुम लोग मार्क्स के लिए इतना मारा मारी कर रहे हो एंड यू ऑल ओनली डोंट नो व्हाई यू नीड मार्क्स इन योर एग्जाम. What to tell you? Now that means mummy is giving you food, mummy is giving you clothes, and you only don't know why you are eating and why you are wearing clothes. हाँ, कुछ ऐसा ही है ना कि मम्मी खाना दे रही है, मम्मी कपड़े दे रही है, मम्मी सब कुछ करके दे रही है घर में और तुमको पता नहीं क्यों कर रही है. अयो. That was a monstrous laugh, Vihan. Socho. Okay, children, on a serious note, let's come back. Children, everybody, I want you all to think deep. Why do you get marks? Think beyond your classroom. Think beyond yourself. Interrogate. अपने आप से सवाल पूछो. Interrogate within. अपने अंदर में सवाल पूछो. Ask it within you. Ask it inside of you. Why do you give your exams and why do you wait for marks? Why marks? Marks क्यों? इस सवाल के लिए तुम खुद अपने आप से सवाल पूछो. घर पे भी 4-5 लोगों से सवाल पूछो. Why? हम मार्क्स के लिए क्यों काम कर रहे हैं? Why are we learning for marks? मार्क्स क्यों आना चाहिए? अच्छा मार्क्स, हमेशा अच्छा मार्क्स क्यों आना चाहिए? इसके बारे में तुम लोग सब खुद सोचो. सोचो और हमारे अगले एनालिटिक्स एंड एप्लीकेशन क्लास में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन ऑन व्हाई मार्क्स. यस सुबान, व्हाट डू यू हैव टू से? Ma'am, if we have written a paper, we don't know how much is correct, how much I have written correct, how much I have written wrong. Okay. So teachers do tick cross to which we have done correct. She do tick and if we have done wrong, that she is give process cross of correction. वो तो correction का process है कि टिक करना है, wrong डालना है. उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? उससे क्या होने वाला है? Then she will calculate our whole mark. Then we will. This why marks are important. How she will calculate, and that is why your marks are important for you. क्या सुबान? Come on, you're in 6th grade. Don't give me this kind of answer, huh?
She will take whatever is correct, she will put wrong to whatever is wrong, and that is why marks are important for you. What is my question? Don't forget the objective. My question still remains, why marks? Marks क्यों होना चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन है. और रणवीर जरा फोन से फिडल करना बंद करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा. Okay, let's take a 2-minute break on that note. Let's take a 2-minute break. Everybody 2 minutes ka break, and we'll come back and we'll join for geography class. But remember, you're going to ask yourself, ask people around you, why marks? Marks क्यों होना चाहिए? दिमाग में एकदम घुसा घुसा के इस सवाल को पूछो. क्यों प्रणव पूछोगे?